Guys, I mean, we have been saying and emphasizing it again and again, more important in metabolic pathways, more central in metabolic pathways, more clinical implications it would have if there is any problem which occur in it, in its machinery. So machinery of the metabolic pathways are usually the enzymes. So let's see what sort of disorders can occur if the machinery or the enzymes have some mutations or have some problem in the TCA cycle. So first of all, of course, the cardiovascular diseases, दिल की बीमारियां आपको पता है कि सबसे अहम होती हैं, because heart is such an indispensable, such an essential organ. बहुत complex इसकी medical implications होती हैं अगर problem हो जाए. तो जो एंजाइम्स हैं TCA के जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें, जिनमें म्यूटेशन आने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, उसमें पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस करने वाला है, सिट्रेट है, सक्सिनेट की प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इन मेटाबॉलाइट्स की किसरत से द एक्सेसिव प्रोडक्शन और लैक ऑफ प्रोडक्शन of these metabolites because of problems in the enzymes which are giving rise to the metabolism of these metabolites, that can lead to many cardiovascular complications. Diabetes, of course, is a disease of the diseases, and you know that because the TCA is so much involved in the metabolism through liver, and so any problem which occurs in liver or associated organs will ultimately have some effect on the spread of or on the etiology of the diabetes. So metabolites like pyruvate, isocitrate or succinate, their levels are really abruptly changed in diabetes. Then non-alcoholic fatty acid disease, liver disease, NAFLD, it's a disease in which fat is deposited on the liver and liver becomes its size increases. And this is also known as fatty liver. And again, it has many complications. And this also occurs because of the increased level of isocitrate and citrate. Again, these levels are increased because of certain problems which are involved in the metabolism of these metabolites in the TCA. Those problems occur. Then some recent studies have shown that there is a link between the TCA cycle and asthma. सांस लेने की जो बीमारी है उसमें भी होता है. इसमें सक्सिनेट का लेवल है, another very important metabolite, इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से कि आपको एस्थमा का प्रॉब्लम होता है. देन जोड़ों की दर्द, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी हमने देखा है कि कई तरह के TCA के एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स की वजह से कई तरह की मेटाबॉलाइट्स का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है. और ये इसमें से एक इम्पोर्टेंट है इटाकोनेट, ये सिस्कोनेटेज की एक्टिविटी की वजह से ये इन्वॉल्व है, यानी कि दिस एंजाइम, दिस मेटाबॉलाइट, इसमें लेवल जब भी अब्रप्टली चेंज होता है तो मुख्तलिफ बीमारियों में से जो एक बीमारी है वो रेमाटॉइड आर्थराइटिस भी है. फिर बहुत सारी बीमारियां, अगर आपको याद हो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द different sort of disorders which are associated with electron transport chain, many of those were neurological disorders. Similarly, because the TCA is so much related to the electron transport chain, so disorders in TCA will also then be linked to the disorders of the brain neuronal activity. जैसे कि ली सिंड्रोम है, न्यूरोनल क्या कहना चाहिए बीमारी है. इसके अलावा
इस नर्वस सिस्टम की इस बीमारी के अलावा और भी नर्वस सिस्टम की बीमारियां जैसे कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की इट्स नॉट वर्किंग वेल, इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन इट देन इट विल आल्सो गिव राइज टू many neurological disorders. Similarly, if there is fumarase deficiency, so again this is a very important enzyme which gives rise to fumarate production. The fumarase में भी जब किसी किस्म की म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से fumarase is not acting well, then it will lead to metabolic disorders, neurometabolic disorders rather. Again, then there is if there is a problem or mutation in the succinate dehydrogenase, or there is a deficiency in succinate dehydrogenase, it will also lead to neurological disorders. Although it's a rare mitochondrial disease, but a severe mitochondrial disease. Anything which is a neurological disorder is really something, a challenging one. It has to be taken seriously.